diagnostic analytics, which is a step ahead from descriptive analytics that we learnt about in our video session 22 of Technology for All in English and Hindi. AI can be used for benefiting masses or for exploiting their weaknesses. AI can be used for common good of all or to benefit one person alone. In the last session, we saw how Mark Zuckerberg used descriptive analytics to drive nudity and super profits to his AI-driven platform, Insta. In this session, we see how he uses diagnostic analytics and sentiment analysis of users to create super profits for his other platform, Facebook. The idea of these videos is not to campaign against any tech major, but to tell users about the tips and tricks so that you can use or evade them. For if you are tech savvy, then you will survive the pitfalls and ride the opportunities by the end of this video. And this time we will introduce you to a course that teaches you how to learn the skill online free of cost so that you can also profit and be one step ahead. Diagnostic analysis, unlike descriptive analytics, does the diagnosis and not only the statistical data analytics of data. Descriptive analysis only does the statistical data analytics, but it does not diagnose the data. The descriptive analytics that we saw in video 22 was good for trend analysis. Though it presents the past statistics on real-time basis, it does not analyze the reasons behind those statistics. And that is done by diagnostic analysis, or which is called a root cause analysis. It is this diagnostic analysis which screens a patient's pathological reports, such as swab tests or respiratory samples or blood tests or serological tests, and gives all the symptoms of whether it is COVID or whether it is some other viral flu disease, something. It gives you the diagnosis of the pathological reports. Here, display from thousands of patients each day not only are displayed in descriptive analytics, but they are also diagnosed. And it is not only hospitals that use diagnostic analysis. Facebook analyzes the sentiments of its users' community using diagnostic analytics. We know a few of them, like thumbs up and down, and we know the likes, etc. Some of the sentiment expression tools are also present in the form of emojis. But Facebook enlisted Dacker Keltner, a technology consultant and a professor of social psychology at UC Berkeley, to shortlist half a dozen of these emojis, which were the most expressive and popular. And of course, you use them. Keltner found that humans were prone to expressing love, joy, humor, sadness, anger, and shock through visual means, and Facebook started testing these emojis to get user feedback. There were some other complex models also, which included conversation analysis. They analyzed the conversation between you and your friends, you and your family, and how did Facebook collect them? Of course, they were not foolish enough to collect the data from the users directly. They did something really innovative. Facebook does not snoop directly. But before we tell you how Facebook snooped so cleverly, let us deliver on our first promise, showing you how to join a free online course on sentiment analysis and be tech savvy yourself. Now here is a disclaimer. They are not run by my friend or associate, but they are run by a prominent institution, IIT Ropar. Here the video. You need to download your Facebook data
you need to log in to your Facebook account, and then you need to go to settings and download your Facebook information there. You need to store your information in an Excel file that I have already explained. Then you need to import the pandas library. It basically provides you easy to use data structure for data analysis. Then you need to import NLTK library. NLTK library will help you to process the human language. It will basically help you to analyze the human data. It will help you in sentimental analysis of human data. Sentiment analysis involves working out whether a piece of text is positive, negative, or neutral. I've already given you example of a positive, neutral, and negative sentences. Then we'll not be using only NLTK, we'll be using Vader too, because Vader also takes into account the intensity of the sentiment. Yes. And then you need to download the Vader lexicon. Lexicon acts as a dictionary here. You also need to convert your Excel sheet that you have created to a data frame. What is a data frame? Data frame is basically a two-dimensional structure in the form of table, which is provided by Pandas library. So this is it. Now we'll be proceeding to the programming screencast in the next video. Thank you. Coming back, let us know about the clever ways Facebook uses to collect user data without being accused of violating privacy. Had they collected the user conversation themselves, they would be in hot water. So instead, they sold a dozen marketing tools like Social Pilot, Brand24, Quintly, and Social Status to their associates on a subscription basis who brought them the consumer data. By analyzing billions of daily conversations between you, your friends, your family, Facebook diagnosed both the needs and the desires of the consumers separately. This was critical information for advertisers, and Facebook shared this data with the brands and soon became the single largest brand marketing platform globally. For example, it diagnosed that the Spanish people were more keen on having a fair and glowing skin, whereas the British wanted a tanned and smooth skin. So that was the basic data on which to work on. And after that, what Facebook did is Facebook sold face washes, cleansing creams, facial scrubs, fairness creams, hydrating masks, shimmery lotions, antioxidant-rich foods that promised to make the skin light and glowing to the Spanish consumers through the Facebook platform. And what did it do for the British? For the British, they brought beautiful, curated, luxury villas from Spain, where the British could go, the rich British could go and spend their summer holidays and get the tan of their lives. So instead of going to the cheaper Greek resorts, they were sold the package tours of the more luxurious Spanish resorts, and Facebook made money and everybody was happy. So this is what Facebook does, and there's nothing wrong in that. And Zuckerberg's futuristic metaverse will combine Facebook, Insta, and WhatsApp in an entirely AI-based platform. It will integrate shopping, traveling, events with your friends, and will give you an experience that will transport you anywhere. You may get the virtual reality experience and choose to hang out with your friends in London or in Paris or in Rome or in Bangalore. Importantly, you could do virtual activities with your friends at all these venues and give feedback about the stores you visit to and share your unique experience about the cities you go to, all earning credits on every purchase you make. So smart Zuckerberg and the brand will be raking in the moolah with your data and your money, but AI will ensure that you feel enriched with the experience. Now we will talk about this later more, but now for our Hindi section. Bye bye friends. नमस्कार दोस्तों, ये 23वां सत्र है टेक्नोलॉजी फॉर ऑल
इन इंग्लिश एंड हिंदी का, और इसमें आप डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के बारे में सीखेंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स से एक सत्र आगे है। ये जो आपने 22वां सेशन में डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सीखा था, ये उसके बाद का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों का भला कर सकता है या लोगों का क्षति कर सकता है, ये आपने देखा। वो सबके हित में काम कर सकता है, वो या एक आदमी का प्रॉफिट बढ़ा सकता है, ये भी आपने देखा। आपने देखा पिछले सत्र में कैसे जुकरबर्ग अपने फायदे के लिए न्यूडिटी प्रमोट करके इंस्टा में प्रॉफिट कर रहे हैं। आप इस बार देखेंगे कि कैसे जुकरबर्ग डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स और सेंटिमेंट एनालिसिस करके फेसबुक में प्रॉफिट कमा रहे हैं। हम कोई टेक मेजर या जुकरबर्ग के खिलाफ नहीं है, पर हम दिखा रहे हैं आपको क्या कैसे जो आदमी टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है वो कैसे फायदा कर सकता है अपने को टेक्नोलॉजी से और डायग्नोस्टिक एनालिसिस से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, सेंटिमेंट एनालिसिस से, इससे कैसे उसे फायदा मिल सकता है और कैसे उसको एक्सप्लॉइट न किया जा सकता है, ये आप सीख जाएंगे। हम इस सेशन के बीच में आपको एक और कोर्स के बारे में बताएंगे जो कि आपको ये और आगे सिखाएगा कि सेंटिमेंटल एनालिसिस होता क्या है और कैसे कर सकते हैं। पर अब चलते हैं हम डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के ऊपर। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आपको डेटा का एनालाइज करता है, स्टैटिस्टिकल डेटा का ट्रेंड एनालिसिस देता है, पर वो उसकी डायग्नाइज नहीं करता, वो उसका जांच नहीं कर पाता है क्या उसमें क्या है क्या नहीं है और क्यों है। ये जांच जो है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स करता है, जो कि ये बता सकता है कि क्या है क्यों है। और जैसे कि कोविड में 50 केसेस थे ऐसे जो कि हॉस्पिटल्स में आते थे, जिसमें लोगों का स्वैब टेस्ट होता था और लोगों का फेफड़े का टेस्ट होता था और लोगों का अलग अलग शरीर के पार्ट्स के टेस्ट होता था। ये सारी चीज की डायग्नोसिस करता था डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, और ये हजारों पेशेंट्स के हर दिन इसका डेटा निकालता था डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स और उसकी डायग्नाइज करता था डायग्नोस्टिक। पर सिर्फ हॉस्पिटल से डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का फायदा नहीं उठाते हैं, फेसबुक भी उठाता है। और फेसबुक क्या करता है, क्या लोगों का यूजर का सेंटिमेंट का एनालिसिस करता है। अब ये सेंटिमेंट का एनालिसिस क्या होता है ये तो आप जानते हैं, आप तो खुद ही थम्स अप या थम्स डाउन करते हैं, लाइक्स करते हैं फेसबुक पे पैनल पे, तो यही सेंटिमेंटल एनालिटिक्स है। और इसके अलावा आप इमोजीज यूज करते हैं, पर इसका थोड़ा सा और हम गहराई में जाते हैं और आपको साइंस बताते हैं। डैकर केल्टनर करके एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट था जो कि प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी है यूसी बर्कले में, और उनको फेसबुक ने लगाया कि आप आधे दर्जन के इमोजीज निकाल दो जो कि मनुष्य या हमारे यूजर जो है वो बहुत ज्यादा यूज करें। तो केल्टनर ने बताया क्या जो प्यार या आनंद या हंसी या रोना या गुस्सा और अचंभा, ये 6 ऐसे इंसान के ऐसे रिएक्शन से जो कि विजुअली बहुत अच्छी तरह से इमोजीज के थ्रू एक्सप्रेस हो सकता है, और यही आप देख रहे हैं आज के दिन में। पर इसके अलावा बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी थे, जैसे कि कन्वर्सेशन एनालिसिस। क्या करता था फेसबुक, लोगों का कन्वर्सेशन कलेक्ट करके उसकी एनालाइज करता था कि लोग चाहते क्या है, पर वो डायरेक्टली कन्वर्सेशन लोगों का टैप नहीं करता था, अगर वो करता तो बवाल हो जाता। तो वो क्या किया ये मैं आपको बताऊंगा, पर इसके पहले आप एक वीडियो सुनिए जिससे आपको पता चलेगा कि आप कैसे और कोर्सेज करके और सीख सकते हैं इस सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में। और ये मेरे भाई भतीजे का कोर्स नहीं है, ये आईआईटी रोपर का बनाया हुआ कोर्स है, ये ऑनलाइन है और फ्री है। सुनिए। You need to download your Facebook data. You need to log in to your Facebook account, and then you need to go to settings and download your Facebook information there. You need to store
your information in an Excel file. That I have already explained. Then you need to import the pandas library. It basically provides you easy to use data structure for data analysis. Then you need to import NLTK library. NLTK library will help you to process the human language. It will basically help you to analyze the human data. It will help you in sentimental analysis of human data. Sentimental analysis involves working out whether a piece of text is positive, negative or neutral. I have already given you example of a positive, neutral and negative sentences. Then we will not be using only NLTK, we will be using Vader too, because Vader also takes into account the intensity of the sentiment. Yes. And then you need to download the Vader lexicon. Lexicon acts as a dictionary here. You also need to convert your Excel sheet that you have created to a data frame. What is a data frame? Data frame is basically a two-dimensional structure in the form of table, which is provided by Pandas library. So this is it. Now we'll be proceeding to the programming screencast in the next video. Thank you. हाँ, अब हम वापस आते हैं आपको ये बताने के लिए क्या फेसबुक ने कैसे स्मार्टली ये डेटा निकाला यूजर्स से। उसने आपका प्राइवेसी वायलेट नहीं किया। अगर वो आपका कन्वर्सेशन डायरेक्टली टैप करता तो उसको बहुत मुसीबत झेलना पड़ता। उसने क्या किया, उसके बदले में 1 डज़न मार्केटिंग टूल्स बनाया, जैसे कि सोशल पायलट, brand24, क्विंटली, सोशल स्टेटस। उसके एसोसिएट्स को बेचा और कहा क्या सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे तुम लोग को ये बेच रहे और तुम लोग हमें यूजर डेटा, कंज्यूमर डेटा ले आओ। और हजारों लोगों को इन्होंने आगे ये बेचा और जब ये इन्होंने आगे बेचा तो वहां से कंज्यूमर डेटा आ गया और ये कंज्यूमर डेटा इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू इन्होंने एनालाइज किया और उससे इन्हें पता चला क्या स्पेन में रहने वाले लोगों को एकदम गोरा और ग्लोइंग स्किन चाहिए, एकदम फेयर एंड ग्लोइंग स्किन चाहिए। तो उन्होंने फिर फेस क्रीम और फेस वॉशेस और फेशियल स्क्रब्स, हाइड्रेटिंग मास्क और एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, ये सारा चीज उसने स्पेनिश लोगों को बेचा क्योंकि वही डिमांड था, उनका स्किन लाइट हो। और ब्रिटिश लोग चाहते थे अपना स्किन टैंड हो और स्मूथ। तो उसने उठा के ब्रिटिश को क्या बेचा, उसने उठा के ब्रिटिश को बेचा क्या स्पेनिश लग्जरी विलास में अच्छे महंगे टूर्स जो है उसने ब्रिटिश को भेजा। क्या आप लोग जाइए वहां पे जाके आप सन टैन हो जाइए और इससे आपको फायदा हो। तो दोनों खुश थे और फेसबुक को प्रॉफिट आया। तो यही है हम आपको बता रहे हैं कि एआई को यूज करने वाले बहुत प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आप भी जानिए, आप भी सीखिए कि एआई करता क्या है, सेंटिमेंट एनालिसिस करता क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस करता क्या है। ये जब आप जानेंगे तो आप भी अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। हमने IIT रोपर का कोर्स का ऑलरेडी आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाए और देखें। पर फेसबुक आगे क्या कर रहा है ये भी मैं बता दूं आपको। क्या वो मेटा तैयार कर रहा है जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सारे का एक्सपीरियंस एक साथ इकट्ठा होगा, जहाँ पे आप दोस्तों के साथ मिल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आप कोई भी डेस्टिनेशन में जाके अपने दोस्तों के साथ यूज़र एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं और उसमें अर्न कर सकते हैं क्रेडिट्स, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। और इस तरह से ज़ुकरबर्ग अपना ब्रांड को आगे बढ़ा ले जाएगा और उसको बहुत फायदे होंगे। पर आपको एआई संतुष्ट कर देगा कि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो ये फायदा है टेक्नोलॉजी का और इससे आप भी लाभ उठाइए। अब अगले सत्र में आएंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।